From Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. Deosai Plateau in northern Pakistan, a place of dazzling beauty and biodiversity, brimming with wetlands feeding rivers of life. It is also a rare refuge for the critically endangered Himalayan brown bear. But this corner of the roof of the world is now drying up. काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है. The marmots and plants that sustain the bears are now disappearing, along with the tranquil life of mountain communities. People and wildlife are now on a collision course. हम उस पोजीशन में तो रहते ना कहीं ये ना हो कि कहीं सुटोर फाड़ दे खुराक की तलाश में. A parched planet affects both bears and the resilient people of Gilgit Baltistan. वो चश्मे भी खुश्क हो गए. 2-4 चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं. पानी नहीं है तो आबादी कहाँ से लाए? Can these isolated communities and the region's largest mammal cope with climate change? In Pakistan's share of the roof of the world, there is a very special place called Deosai. Perched at over 13,000 feet above sea level, it is the world's second highest plateau, surrounded by some of the highest mountain ranges on Earth. An arid and vertical world. On the plateau, Ghulam Mehdi is a ranger in Deosai National Park. His job is to protect 1800 square kilometers of this stunningly biodiverse landscape. 13-14 हज़ार फुट की बुलंदी पर अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा मैदान बनाया है. यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के नदी नाले हैं, यहाँ का पानी है, यहाँ के फूल हैं, यहाँ का घास है, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि इसको ये मुनफरद बना देती है. हमारी सारी ज़िंदगी जो है ना इस देओसाई के अंदर गुजरी है. For millennia, prolific summer monsoons drenched Deosai with rainwater. And winters covered it with a blanket of snow. Spring thaws unleashed water to cascade down from the surrounding peaks. Creating lush, high-altitude wetlands, the likes of which are found nowhere else in the world. This verdant paradise is the only place on Earth where Himalayan brown bear numbers are on the rise. मैं देओसाई नेशनल पार्क में 22 सालों से काम कर रहा हूँ. जब हम स्टार्ट में यहाँ पर आए थे तो 15 रीच लेके आए थे और आज अल्लाह का करम है जो है ना 78 बियर यहाँ पे है. तो ये हमारी मेहनत है, ये हमारे स्टाफ की मेहनत है, ये हमारे डिपार्टमेंट की मेहनत है. But this year, spotting bears has been difficult for Mehdi because of the rapid changes on the roof of the world. In 5 decades, the temperature here has risen at double the rate of the rest of Pakistan, severely affecting the once predictable monsoons. काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है. इस साल की आप मिसाल ले लें कि यहाँ पे जो है ना जून जुलाई अगस्त में बारिशें बिल्कुल ही नहीं हुई. इस साल पे इतने फूल भी नहीं आए, घास भी इतना नहीं था. पहले यहाँ पे माशियाँ होते थे, माशियों में पानी खड़ा होता था, वहाँ पे घास जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन होता था. लेकिन इस साल बिल्कुल ही घास नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, माशियाँ खुश्क है, पानी नहीं है.
and no sign of the bears. करीब करीब में बेर बहुत ही कम आ रहा है, काफ़ी हमें दूर जाना पड़ता है। एंड में जाके पहाड़ी के नीचे जहाँ पे वहाँ पे सब्ज़ा थोड़ा सा सब्ज़ होता है, तो उन एरियाज़ में जो है ना बेर मिलता है। After weeks of searching, Mehdi finally locates a mother and cub. This little fella is just starting to come to grips with life in a very challenging environment. But it has the perfect teacher. Its mum. She'll teach it every survival skill it needs on the very roof of the world, including finding the best food by putting that incredible nose to use. Bears can detect scents from miles away, and with so many aromatic sources to choose from, the bear cub must learn which smells to trust and which ones to avoid. At this altitude, their diet is poor and the air is thin. Cubs grow slowly and stay with their mother for 4 years. It is the longest family association among brown bears in the world. Living in such a cold place with low energy food also affects their birth rate. After mating for the first time when they are 8 years old, females usually give birth to a single cub. It's a good strategy and gives this cub better chances of survival. Cubs stay with their mothers for so long that eventually it is difficult to tell them apart. Now it's time for this bond to end, and this cub will soon be on its own. Mom has done what she can. But what are its chances to survive in such a rapidly changing world? There was a time when the bears were almost extinct in Deosai. Before the national park was created in 1993, their numbers had dropped to below 20 individuals. They were poached for illegal wildlife trade and hunted for pleasure. Even today, these bears seem to remember their near extinction and have become very timid. Brown bears worldwide had already lost 98% of their former range. The creation of Deosai National Park gave these giants a chance to recover. But now it seems these bears are facing a new challenge: the desiccation of their wetlands. By 2050, all Himalayan brown bears will lose 11% of their current range due to climate change. That is a big problem for a species whose diet is 90% vegetarian and whose local name Spengdrenmu literally translates to vegetarian bear. This bear has come out of hibernation and now needs to build up fatty reserves for the winter ahead. The best bear food is in these marshes. They cover only 15% of the park, but half of Deosai's plant biomass grows here. Bears love to dig up the stalks and succulent roots hidden deep down in the moist soil.
This is what they leave behind. Long claws powered by a muscular hump on the shoulder enables this bear to tear through this turf. Bears in Deosai spend a lot of time foraging. Once their bellies are full, nothing beats a nice back scratch. This bear has a favorite spot. A good scratch doesn't just feel good. The scent left behind on the rocks lets other bears know he's been around. This is very rare behavior to spot. And the first time a Himalayan brown bear has been caught in the act. At these altitudes, there are no fruits and berries. Protein is also scarcer than in other brown bear habitats. That's why even at 150 kilograms, they weigh only half that of North American grizzlies. But they do occasionally enjoy a taste of meat. And the fat marmots know that they are on the bear's menu. That was a close call for this marmot. These huge rodents spend more than 80% of their lives underground. They have sturdy and blunt claws, the perfect tools to create their elaborate burrow systems. These are marmot highways, which provide easy access to food and water. Marmots also hibernate in winter, and they lose up to 40% of their body mass to survive the extreme cold. When they emerge, they are marmots on a mission. They feed non-stop to build up that layer of fat that'll keep them alive through winter, taking advantage of spring's bounty to rebuild their body mass. A vigilant sentry has saved the day for the residents of this marmot colony. But it cannot stop a bigger threat to their future. In 15 years, glaciers in some of Pakistan's regions have receded by 28%. Wetlands are drying up, and the food that grows there is disappearing. Wildlife is going hungry. मार्मट्स के डेंस वगैरह देखें काफ़ी तादाद में होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से काफ़ी यानी कि वो मार्मट्स ख़त्म हो चुके हैं. That hunger plays a role in a dangerous development. Deosai's bears are losing their natural fear of humans.
Ghulam Hussain has been observing the changes in bear behavior outside his camp. मैं यहाँ 1997 से होटल चला रहा हूँ। कम तर आता था ना, अभी तो ज़्यादा बढ़ता है, डेली आता है। दिन ब दिन वो करीब आता जाता है, साल ब साल करीब आता जाता है। अभी इस वक्त थोड़ा सा उसको खुराक कम होता है तो फिर वो आगे पीछे अपनी खुराक की तलाश में करीब होटल के करीब आता है। कहीं उसको चीज़ वीज़ मिले, मुर्गी मिले, कहीं हड्डी मिले, कहीं गोश्त मिले। हाँ, फिर हम उस पोजीशन में तो रहते ना, कहीं ये ना हो कि कहीं सुटोर फाड़ दे खुराक की तलाश में। वो क्योंकि टमाटर प्याज का बड़ा आशिक है, गोश्त का भी आशिक हो सकता है क्योंकि भूख से। As night falls in Deosai, the aroma of spicy dishes fills the air, irresistible to the bears. They take whatever they can find. This bear has sniffed out an old barbecue pit. For an animal as timid as a Himalayan brown bear, this act of raiding so close to humans is an act of desperation. इस वक्त तो देवसाई में बड़ा रश होता है, होटल हैं 4-5, तो रीछ के लिए आराम से अपनी खुराक मिल जाती। जब क्लोज हो जाते तो रीछ को वहाँ कुछ नहीं मिलता है, फिर वो मजबूरन रीछ गांव की तरफ निकल आता है। Human-bear conflict is the new reality. मेरा अपना एक जोह पीछे था, 80,000 1 लाख तक वो जो था, तो कहीं रात को निकला है उधर, तो वो खा लिया रीछ ने। तो सुबह रीछ को भी हमने देखा और वाइल्ड लाइफ वालों को ले जाके दिखा दिया कि भाई ये रीछ ने खाया है। Manzoor Hussain's future, just like that of the Himalayan bears, depends on a well-watered world. The many streams of melted ice traversing the Deosai plains give birth to 3 major rivers. They all eventually flow into the mighty Indus River, which gets 80% of its water from snow and glacier melt and sustains 270 million people. Manzoor Hussain's village is close to the source of this bounty. मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। गाँव में माहौल साफ है, साफ सुथरा पानी हमें मिल रहा है, ज़हनी सुकून है। सब्ज़ी हम अपने खुद गा के खुद खा रहे हैं, बाज़ार की जो यूरिया है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 3 गाँव माइग्रेट होकर इधर आ जाते हैं गर्मियों में। मालमोशी यहाँ से हमें आसानी के साथ नालों में घुस जाती है। शहर में सहूलियात तो हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, फिर आमदरफ्त का कोई इशू नहीं होता, गाड़ियों का कोई इशू नहीं होता। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे अपने गाँव याद आता है कि मेरे गाँव का साफ माहौल, मेरे गाँव की ग्रीनरी, फिर गपशप। Like the bears' wetlands, Manzoor Hussain's way of life is disappearing. Climate change not only leads to extreme events like the freak monsoons in 2010, which killed 1,600 people along the Indus, it is also responsible for unpredictable weather patterns that damage livelihoods. मेरी याद में भी करीब कोई 6-7 फुट बर्फ़ इस वक्त हमारे गांव में पड़ रही थी।
लेकिन ये 2, 4, 5 सालों से नज़र आ रहा है नहीं, बर्फ़ नहीं पड़ रही। ज़्यादा हो गया 2 फुट या 3। शुरू ज़माने में उस वक़्त तो हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे वालिदैन कहा करते थे कि ये छतों में ऊपर तक ऐसे ही बगैर सीढ़ी के हम ऊपर चढ़ जाते, इतनी बर्फ़ पड़ जाती। तो उस वक़्त हमारे बाप दादा जो है माल मवेशी ज़्यादा रखते थे, तकरीबन 100-150 के करीब माल मवेशी रखते थे। लेकिन अभी वो इतनी नहीं रख सकते हैं। आप देखें जंगल में घास की भी कमी हो गई, मैदान हरे भरे उस वक़्त थे, लेकिन अभी उस वक़्त इतने नहीं हैं क्योंकि पानी कम हो गया, बारिशें कम हो गई। मेरे जो वालिद साहब थे, बाप दादा, उनका कहना ये था कि जो बर्फ़बारी होती है वो दिसंबर या दिसंबर के एंड के बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी, जाके फिर अप्रैल में ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इसका तो कोई सीज़न ही नहीं है। मैं 2-4 सालों से देख रहा हूँ, यकम नवंबर को भी यहाँ 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ गई, जिसकी वजह से हमारी माल में मुतासिर और यहाँ पर जो हमारा माहौल था वो भी मुतासिर हो गया। क्योंकि एक हम तसलसल के साथ जा रहे थे कि हम अपनी स्टॉक्स करते हैं। अभी ये हमारी छतों में देख रहे हैं ना, तो जाके ये हम एवरेज लगाते हैं कि शायद ये दिसंबर से लेके मई तक हम स्टोर करते हैं, उसी हिसाब से हम माल मवेशी रखते हैं। तो अभी 1 महीना पहले घास डालना हो गया तो लामहला वो घास हमें कम पड़ जाएगा ना, तो थोड़ा इसका इशू आ जाएगा। Studies have shown a dramatic decrease of the alpine pasture biomass in Gilgit Baltistan. 1-2 और चश्मे भी हैं इधर साथ ही। चश्मों में वो पानी न होने के बराबर है। पहले ज़्यादा आता था, लेकिन अब वो पानी कम होके ख़त्म हो गया। वो चश्मे भी खुश्क हो गए। 2-4 चश्मे तो ऐसे हैं, वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं। अभी नीचे गाँव में है, काफ़ी जगहों में ऐसे खेत हैं, वहाँ पर पानी नहीं जाता। Green pasture lands are now turning into deserts. With the change of seasons, dramatic changes come to Deosai. Winter encroaches onto the plains. After a rough, dry summer, the bears are having an even tougher time this fall. But that doesn't stop Ranger Mehdi on his mission to save the bears. जॉब मैं सिर्फ इसके लिए नहीं करता हूँ कि मुझे तनख्वाह मिलती है। जॉब सिर्फ मैं ये समझता हूँ ये मेरा अपना इलाका है, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना, यहाँ पर वो करना, मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके के साथ वो है। तो मैं इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता हूँ। मुलाजमत से हट के यहाँ पे हम काम करते हैं। ना हम दिन देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। But is this life now coming to an end for people and bears? अब देहात में तो मैं अपने बच्चों को फ्यूचर नहीं दे सकता। देहात की इस फ्यूचर लाइफ से मैं अपने आप को सेफ नहीं रख सकता। तो वो मज़े भी नहीं हैं, आबादी के मज़े भी नहीं हैं। उस वक़्त माल मवेशी रखते थे, वो मज़े भी नहीं हैं। अभी मैंने सोचा ये है कि मैं यहाँ से कुछ पैसे वैसे जमा करके माइग्रेट हो जाऊँ। But the Himalayan brown bears have nowhere else to go. Deosai is their last stronghold in Pakistan. Climate change may be an abstract concept for many, but for the people, wildlife, and natural heritage on the roof of the world, it is a devastating reality. If we do not act today to halt climate change in its tracks, we will not only lose the unique landscapes, wildlife, and cultures in Deosai, but those of many regions downstream.
It is time to listen to the voices from the roof of the world. अपनी ये धरती याद आ जाएगी अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा तो। चलती फिरती हवाएं याद आ जाएगी, जैसे भी अपने बाप दादे की ज़मीन है वो सताएगी, याद आएगी।